to deal with the single child, right? तो single child का क्या है कि nowadays we are having a society in such a way that we are all most of the families are going for single child, right? Because of the working couples or increasing the financial burden of education and maybe late marriages. So most of people are going for single child. And single child is really, I would say, it's a boon because I have got a single child. So I think single child is always more creative and we can really give our undivided attention to a single child. But definitely there are downsides to having a single child. And one of the situation which is being faced by most of the parents, and they have asked me also, if single children, they don't like to share things. They are not sharing. They are kind of selfish. अपने आप में रहते हैं, right? So I tell few tips how to make them more sharing. और दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने मुझे बताई कि they feel bored all the time. घर में अकेले हैं, they don't have a sibling. वो कहते हैं हम तो बोर हो रहे हैं, हमें कोई चाहिए हमें खेलने के लिए, है ना? So that is the second problem. So I deal with these two problems. First is how to inculcate the sharing attitude in them, and second is how to not how to let their time pass at home. घर में कैसे उनको हम responsible बना सकते हैं. So first is sharing. तो देखिए जैसे घर में अगर सिबलिंग होता है तो इट्स अ काइंड ऑफ रफ एंड टफ जॉब. सिबलिंग रिवलरी होती है. यू हैव टू शेयर, यू हैव टू नेगोशिएट, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज. बट हियर नोबडी इज देयर टू डू ऑल दीज थिंग्स. सो हाउ वी कैन डू इज, फर्स्ट इज हम उनको बोल सकते हैं कि आपको शेयर करना है. तो उसके लिए बच्चे छोटे हैं, उनको समझ नहीं आएगा कि क्यों बोल रहे हैं शेयर करने को. व्हाट इज माइन इज माइन. सो वी हैव टू गिव देम इंसेंटिव फॉर दैट. देखिए अगर आप शेयर करोगे, अगर आप अपने टॉयज शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में या जहाँ पे वो अपने कम्युनिटी में खेलते हैं बच्चों के साथ, तो ऑलवेज टेल देम कि अगर आप शेयर करोगे यू विल गेट टू प्ले विद देयर टॉयज आल्सो. यू कैन ऑलवेज एक्सचेंज. So that is one incentive. You will get to play with other toys, different toys also. And second is that you can make more friends. If you share your toys, you will be liked by so many other children. So it will make you more likable. More likable means you will make more friends. So these things we can use to trick them into sharing their things. And second is taking turns. देखिए अगर घर में दो बच्चे होते हैं तो कभी किसी को कुछ पहले मिलता है, कभी किसी को कुछ पहले मिलता है. नाउ द सिंगल चाइल्ड इज हैविंग ऑल योर अटेंशन एंड इज गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम यू. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टीच देम टू टेक टर्न. वो कैसे सिखा सकते हैं? बाय प्लेइंग सम गेम्स. वी कैन प्ले सम बोर्ड गेम्स. बोर्ड गेम्स आर रियली नाइस वेयर दे कैन लर्न टू टेक टर्न्स, बिकॉज यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न. यू हैव टू नेगोशिएट. You have to sometimes compromise, and then there is winning and losing. So ये उनको पता लगता है कि अच्छा कभी हार भी सकता हूँ, कभी जीत भी सकता हूँ. Otherwise, single child is always like I get whatever I want. Don't you agree? Right? So this is thing. First is we have to tell them to share things, and two incentives are there that you will get to know more people, more children, and second is you will get new toys to play. And then is taking turns through board games at your house. So get lots of board games at your house and then play with them, and that will inculcate the habit of waiting, compromise, negotiation, and just that feeling of winning or losing. Life is a celebration, right? And then how to make them spend their time. देखिए अभी हम कुछ और ज्यादा नहीं कर सकते because sometimes we both are like working parents. So what we can do is let them do something in household chores. उनको घर के कामों में कुछ उनको जिम्मेवारियां दे दें हम लोग कि you have to lay the table, you have to cut the salad. They'll really enjoy if you make it a fun. अगर आप उनको जबरदस्ती कि तुमने ये काम करने में वैसे नहीं, let it make it a
let it be a fun kind of thing. तो वो उनको अच्छा लग जाएगा और दिल उनको टाइम पास करने के लिए भी बहुत अच्छा एक काम मिल जाएगा. And they'll be becoming responsible day by day. So they'll not become bored also. नहीं तो usually single child is always saying मैं बोर हो रहा हूँ, किसी को बुला दो. And yes, this is the third thing we can do. We can always go for social gatherings where they can find their उनके अपने एज ग्रुप के बच्चे उनको मिल जाए. You can call them to your house or you can go there. This is the third thing. This I think we might be doing also, but this we can do on more regular basis. So these are the things we can do with a single child, and there are few things which we don't have to do with a single child. Which are those things? First of all, we don't have to push our own agenda. मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो अब क्योंकि मेरा एक ही बच्चा है तो अब मैं और किसको बनाऊंगी, तो इसको डॉक्टर ही बनाना है या मुझे इसको इंजीनियर ही बनाना है. तो लेट अस नॉट पुश आवर एजेंडाज इनटू अ सिंगल चाइल्ड, एंड यू हैव टू डेफिनेटली ड्रॉप मेकिंग देम इनटू अ मिनी मी. मेरे जैसा ही जो मैं चाहता था, मेरे ड्रीम्स अब मेरा बच्चा पूरा करेगा. Definitely you can't put that much of burden on your single child. You have to let it go. So this is first thing, that do not put your own agenda into your only child. And second is, do not overindulge. तो overindulge क्या है कि जो कुछ भी मांगा बच्चे ने हम साथ के साथ दे देते हैं बच्चे को, because we can really that's the only reason, that might be the one of the reason we have single child, that हम एक बच्चे की उनकी सब जरूरतें पूरा कर सके. But we don't have to overindulge, right? और इसको रोकने के लिए क्या करना है? We have to set limits. कि इस महीने अगर कुछ उसने मांग लिया, आपने पूरा कर दिया, तो वो नेक्स्ट डिमांड उसकी फिर नेक्स्ट मंथ या 2 मंथ, जो भी आप अपना लिमिट सेट करना चाहते हैं, उसको लिमिट सेट करें. एंड देन यू कैन ऑल्सो सेट द कॉन्सिक्वेंसेस. मान लीजिए बच्चे ने आपको बोला मुझे वीडियो गेम लेना है, तो वीडियो गेम आप उसको दिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उसको चेक करना है कि यू विल प्ले वीडियो गेम फॉर हाफ एन आवर एवरी डे, नॉट मोर देन दैट. अगर आपने ये बाउंड्री सेट नहीं की, तो बहुत से बच्चों के साथ आज यही हो रहा है कि दे आर इनटू दीज वीडियो गेम्स ऑल द टाइम. सो पहले दिलाने से पहले आपने ये बाउंड्री सेट कर देनी है कि यू विल प्ले फॉर हाफ एन आवर, and if you do not do, then set the consequences also. कि अगर आप आधे घंटे से ज्यादा गेम खेलोगे तो आपसे ये गेम लेके रख ली जाएगी, and you won't be given for 1 week, और जो भी आपने एक बाउंड्री सेट करनी है वो आप कर सकते हैं. तो वो कोई भी डिमांड पूरी करने से पहले सेट द लिमिट्स. और फिर दूसरी बात, you have to delay fulfilling demands. जो सिंगल बच्चों की होती है ना, वो उनको पता क्या होता है कि I will get whatever I want. ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि मुझे सब कुछ मिल जाता है जो मैं मांगता हूँ. तो वो थोड़ा सा उसको चेक में रखना पड़ेगा. You don't have to fulfill each and every demand. थोड़ा देर में उनको बोलो हाँ कोई बात नहीं, अगले महीने, इस महीने बजट नहीं है, हम आपको अगले महीने लेके देंगे. ठीक है, तो these 2 things we have to do: set the limits and a little bit of delay in fulfilling the demand, so that they don't get that attitude of I will get whatever I want, right? So there are always positives and negatives to having a single child, but I'll tell you, single child is always more creative because we are able to give our undivided attention to the child. So no worries. आप ये worry दिमाग से निकाल दें कि that my child is not going to be social, उसमें कुछ कमी रह जाएगी. Because I have a son who is extremely social, and I was also having this apprehension that he's a single child, but no worries about that. So abhi I'll tell you about one research also. They have done a research in Ohio State University with 13,000 teenage children. So what they came to know, that there was no lack of social skills in a single child. So you can rest assured, be happy, that enjoy your time with a single child. That is what I can say. And if there are any queries regarding this issue or any other issue, you can always post us in this group,
or you can join our WhatsApp group where you can post your everyday queries. Thank you so much.